In the last lecture, we had seen various determinants of pricing, that is demand, competition, under monopoly, oligopoly, then monopolistic competition that we had studied in the last lecture, then objectives of pricing policies, how you are going to decide the profit objectives of pricing policies. So first one was this profit satisfaction objective, making money objective, preventing competition objective, market share, survival is objective, market penetration objective, market skimming objective, early cash recovery objective, and satisfactory rate of return. These are the objectives that we had seen in the last lecture. Now, in the fourth unit, we are just studying the pricing strategies. Getting this? So demand dekha, supply dekha, income dekha. In the previous units, we have seen. Now it's a time to decide the price of product. Okay, it's a time to set the selling price of your finished product. So how to decide the selling price? At that time, there are various methods. Getting this? So by using these methods, by adding some of the margin into total cost of products, you will decide the selling price of your product. Because we have know that there is the inverse relationship between demand and pricing of the product. Again, it depends upon the elasticity in between price, income, and demand. Accordingly, the demand and quantity relationship changes. So here, to get me customers in the market, what I have to do, I have to decide my cost. Okay, so there are various methods of costing which you can utilize while deciding the selling price of your product, because selling price is the price which decides your revenue. Selling price क्या decide करता है? आपका revenue decide करता है. Getting this? So seller, how you are going to calculate revenue? Revenue is equal to selling price per unit multiplied by number of units sold into the market. So you will get the turnover. So decide my revenue. To decide my profit objective, I need to decide my price. Getting this? To decide the price, there are various methods. We are going to study these methods. So first method is cost plus or full cost pricing method, in which it is the common method. If you are very new into the market, and if you wanted to set your price, if you wanted to set your customer, at that time we need to go towards this approach, in which what we are doing, we are just recovering cost. What we are doing, we are just recovering the cost first. So what are the cost where? So there will be the fixed cost, material cost, labor cost, and direct expenses. Getting this? So first we are trying to recover this cost. So whatever is your cost of production means what? Cost of material, cost of labor, and cost of overhead. मान लो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मटेरियल कॉस्ट है 100 रुपीज, लेबर कॉस्ट अगेन 100 रुपीज, and overhead cost is again 200 rupees. So 100 plus 100 plus 200, it becomes 400 rupees into your total cost. So in that total cost, what you will do, you will express these things in front of my customer. आप हमारे कस्टमर के सामने ये सारे एक्सप्लेनेशन दे दोगे कि भाई इतना मेरा मटेरियल का कॉस्टिंग है, इतना मेरा लेबर का कॉस्टिंग है, इतना मेरा ओवरहेड है, तो टोटल मेरा ओवरहेड इज 400 रुपीज, तो उसमें मुझे कम से कम 20% प्रॉफिट तो चाहिए. Why I need 20% profit? Because I have to pay dividend to my shareholders, I have to pay loan to my bankers. तो कम से कम मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए. तो 400 का 20% हम लोग क्या करेंगे, फिर एक बार 80 रुपए उसमें ऐड करेंगे. सो टोटल प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट विल बी कॉस्ट प्लस माय कॉस्ट इज 400 रुपीज प्लस प्रॉफिट इज रुपीज 80. So total price or final price of my product will be 480 rupees. In which what I have done, first I have calculated total cost of my product, and in which some proportion of margin I have decided. And entire thing I have explained to my customer who is purchasing my product. That is something about cost plus approach. So with reference to your total cost of production, you will decide the selling price of your product. Okay. Now, cost plus pricing is the pricing method that attempts to ensure costs are recovered while providing a minimum acceptable rate of profit for the entrepreneur. In which what we are doing,
we are just trying to find out, trying to recover the costs. So in these costs may consist of fixed costs as well as variable costs. So in first case, what we have done, we have just taken the variable cost. So we can also add the total cost. So total cost is equal to fixed cost plus variable cost. So let us say variable cost is a 400 rupees, in which I can add again your fixed cost rupees 100. So total become 500 rupees, and 500 रुपीज के ऊपर फिक्स रेट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ एक्सेप्टेबल प्रॉफिट कितना एक्सेप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 10%, 500 का 10% 50, so selling price of my product will be as per this approach is 550 rupees. Getting this? So here whatever charges we are incurred, we will be presenting these charges in front of our customer, and if customer get convinced, then we will charge this price. Okay, now the cost, it is calculated by adding fixed markup यानी मेरा margin, मेरा profit का हिस्सा, to an average unit cost of production. Per unit cost पे मेरा इतना margin है, तो accordingly number of units जितने production करोगे उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, variable cost per unit, fixed cost per unit I will calculate, and with respect to this I will decide the total selling price per unit. The percentage differs among the industry. तो ये margin percentage है, मेरा profit का proportion difference among the industry. Again there is the demand and supply into the market that can be analyzed, and accordingly how many competitors are there in the market. If I increased or if I decrease the prices per unit profit, so whether my customer will stick with me or they will move towards other product, ये भी matter करेगा. अगर मैंने प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन 10% किया, टोटल कॉस्ट तो कस्टमर देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रॉफिट का जो हिस्सा मैं चार्ज करूंगा उसके ऊपर कस्टमर रुकेगा. अगर मैं 20% प्रॉफिट ऐड किया तो if customer is not satisfied, then what will happen, I have to reduce my margin up to 10%. Okay, so this is the minimum margin which I want to recover through this selling of the product. Getting this? So in which first my total cost is fixed, and along with this I am doing, I am charging my profit margin. So it may reflect differences in the competitive intensity, differences in the cost base, and differences in the rate of turnover and risk. So product wise, company wise, competitive wise, ये cost plus pricing varies होता है. मेरे कंपनी का, मेरे इंडस्ट्री का कुछ अलग रहेगा. फॉर एग्जांपल फार्मा इंडस्ट्री के बारे में कुछ पैरामीटर्स अलग रहेंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पैरामीटर्स अलग रहेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पैरामीटर्स अलग रहेंगे. गेटिंग दिस? So this is something about the cost plus approach. Again, ordinarily margin charge are highly sensitive to the market condition. तो अगर जितना भी प्रॉफिट हम लोग चार्ज करेंगे, अगर ये हाईली सेंसिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज दिस कॉस्ट प्लस अप्रोच. उसमें क्या होता है, देखिए, बायर्स में परसीव दैट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज द रीजनेबल, क्योंकि बायर जो लोग हो रहेंगे तो उनको वो प्राइस रीजनेबल रहेंगे, बिकॉज they exact know what is total cost of your product and how much margin you are charging from him. That's why they are very reasonable and they will be satisfied. In some cases, markup is mutually agreed between buyer and seller. Markup यानी profit margin. दोनों बैठ के डिस्कशन करके फिर ऐड करेंगे उतना प्रॉफिट. दिस इज द एडवांटेज ऑफ this cost plus profit approach. Now, cost plus pricing can also offer competitive stability, decreasing the risk of price competition if all companies adopt cost plus pricing approach. क्योंकि हर एक का कॉस्ट अलग अलग रहेगा, accordingly हर एक का प्रॉफिट मार्जिन अलग रहेगा, and on that basis my selling price of each and every product will be different, and accordingly I will make the agreement between buyer and seller. Buyer and seller के बीच में agreement बनेगा कि future next 2 years you will be supplying goods and services at so and so rate. So this rate is not going to be changed till next meeting. जब तक अगर अगला मीटिंग नहीं होगा, अगला एग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक इसी रेट से आपको मैन्युफैक्चरिंग करके मुझे देना है, एंड दैट आई कैन डिसाइड. सो दैट व्हाट विल हैपन, माय कस्टमर विल नॉट मूव टुवर्ड्स माय कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, क्योंकि उन्होंने और
है और उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ। The strategy enables pricing changes to the goods and services relative to increase and decreases in the product cost. अगर प्रोडक्ट कॉस्ट हम लोगों का कम अगर ज्यादा हो गया तो उसके हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्कअप चेंज करके सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं पर यूनिट का। So this is the advantages of this method. When there is the little market intelligence, the use of cost plus pricing strategy compensate for the lack of information by setting prices based on the actual cost. अगर मार्केट बूम हो रहा है, अगर मार्केट में कुछ अच्छा डिमांड आ गया तो एट दैट टाइम आल्सो व्हाट विल हैपन, we can't take the benefit of margin, we can't take the benefit of demand, heavy demand. So this is the one disadvantage of this cost plus profit concept. अब ये देखिए ये मेथड कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज जनरली अडॉप्टेड बाय द रिटेल कंपनी सच एज ग्रोसरी एंड कॉटन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये मेथड जनरली यूज होती है। उसमें कॉस्ट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना कमाना है, दैट दिस विल बी डिसाइडेड एंड बेसिकली दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, this is the contract. So cost plus based pricing is way to induce seller to accept the contract, the cost of which represent large fraction of seller's revenue, for which costs are uncertain at a contract. So here it is the contract between buyer and seller, in which what is the total cost, what is the profit margin, what will be the period up to which this contract will be continue. So each and everything will be in contract and you will take, and so that due to having the contract in between me and my buyer, I will be free about the risk of losing my customer, as well as that buyer will be also risk free about the finding the supplier more. Okay, this pricing strategy focuses on internal factors like production cost rather than external factors like consumer demand and competitor prices. Because me and my customer, me and my buyer has been already decided this price, so that have no, I don't have nothing to worry about the my market, क्योंकि मेरा market already fixed है, price भी fixed है. Getting this? So just I have to think about my production capacity. This is about first method of pricing, that is cost plus pricing. अभी second method है marginal cost pricing. Marginal cost pricing means what? Marginal cost is nothing but your variable cost. हम लोगों ने cost plus previous method में क्या किया? We have recovered fixed cost as well as variable cost. हम लोगों ने प्रीवियस मेथड में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करते समय फिक्स कॉस्ट भी कंसीडर किया और वेरिएबल कॉस्ट भी कंसीडर किया। अभी ये मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग में वी विल ओनली फोकस ऑन मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं? जो कॉस्ट वेरी होती है एज पर प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा उतना मेरा ज्यादा कॉस्ट आएगी, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं? अगर हम लोगों ने प्रोडक्शन ऊपर नीचे किया तो वो कॉस्ट चेंज नहीं होने वाली, उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट pricing. So under this marginal cost pricing, fixed costs are ignored. Means what? We will not consider the fixed cost while deciding the final price of the product. We will, with the help of marginal costing, with the help of only variable costing, we will be deciding. So the prices are determined on the basis of marginal cost. Marginal cost means what? It is extra cost which will be linked with my extra production. Try to understand. Extra cost linked with my extra production. इसका मतलब क्या है? If I procure 1 cup of tea, at that time I have to pay, for example, 5 rupees. Getting this? तो अगर in spite of giving one order, I will order in the bulk. तो 1 कप लिया तो मुझे 5 का ऑर्डर मिल रहा है, 5 रुपीज देना पड़ रहा है। लेकिन अगर बल्क में मैंने ऑर्डर किया तो 5 रुपए देने की जरूरी नहीं है ना। So if I order him 50 cups, at that time he will supply me at rupees 4. Try to understand. Because if order increases, automatically price may decrease. Because I am purchasing in bulk. अगर 1 कप की जगह पे मैंने 50 कप मांगे तो वो क्या करेगा? 4 रुपए या 4 रुपीज 50 पैसे तो मुझे देगा।
नाउ एज पर दिस मुझे मेरा कैपेसिटी हॉल का था 50, तो 50 ऑर्डर दे दिया है। तो 50 ऑर्डर का मुझे प्राइसेस कितना हो रहा है, फॉर एग्जांपल 4.5 रुपीज, 4.50 रुपीज। अभी मान लो और एक कस्टमर मेरे पास आ गया। So this was the batch. If my production is batch, if I'm giving order in bulk, at that time some cost will be there, different cost will be there. Now, if I produce more, अगर मुझे एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना रहेगा तो उसके लिए जो कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल कॉस्ट। So that cost will be not similar as like your previous cost. Try to understand. So marginal cost is the cost which is the cost of extra unit if I produce more. Getting this? So on that basis, I will decide the pricing of your product. So on the basis of variable cost, because what will happen if we are producing extra unit at that time, fixed cost is already recovered by you. इसका मतलब क्या है, अगर मेरा 50 मेरा ऑडियंस है, 50 के लिए मैंने चाय मंगवाई, वो 4.5 रुपीज से मुझे मिली। अगर 51th वाला जब मेरे पास आएगा तो उसको भी मुझे चाय देनी है। वो चाय बनाने के लिए वो चाय बनाने के लिए जो फिक्स कॉस्ट जो मेरा था वो ऑलरेडी 50 में कवर हो गया है। गेटिंग दिस? तो व्हाट आई विल डू, आई विल ओनली चार्ज सम ऑफ द एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट। जितना वेरिएबल कॉस्ट आती है, जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट आती है, उतनी ही मैं क्या करूंगा, रिकवर करूंगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी, मेरा प्रोडक्शन लेवल है फॉर एग्जांपल 50 का। तो 50 यूनिट के हिसाब से मैंने क्या किया है, आई हैव चार्ज फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। तो 50 के ऊपर मैं क्या करूंगा, मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवरी करूंगा। 50 में मेरा फिक्स कॉस्ट, आई विल रिकवर फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट चेंज होने वाला है, लेकिन फिक्स कॉस्ट विल रिमेन एज इट इज फॉर लेवल ऑफ एक्टिविटी। ओके, so when I go to produce extra unit, at that time my fixed cost is already recovered by the 50 units। 50 units में मैंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया था फिक्स कॉस्ट। अभी जो नया प्रोडक्शन करूंगा 51th वाला, तो उसमें फिक्स कॉस्ट ऐड नहीं होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज ऑलरेडी रिकवर्ड बाय अनदर 50 यूनिट। तो मुझे फिक्स कॉस्ट नया यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखते समय क्या करना है, I have to consider only direct material cost, direct labor cost, and direct expenses. I will not add the cost of fixed cost. That is the fixed cost, because fixed cost is already recovered through these 50 units. तो 51th वाला जो रहेगा, that cost will be only variable cost. तो यहाँ पे marginal cost किसको बोलते हैं, cost of extra production. It may be, क्योंकि क्या है ना, फिक्स कॉस्ट की कॉस्ट हम लोगों ने रिकवर की है। अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है तो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट ज्यादा भी हो सकती है ना। जब 50 का बैच मैंने ऑर्डर दिया तो उस इन दैट केस चाय की कम कीमत कितनी थी, फॉर एग्जांपल पाउडर मिल्क की ज्यादा, तो उसकी कॉस्ट कम थी, इसलिए मुझे सप्लायर ने कम रेट में दिया। अगर मुझे एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एक मान लो, लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर 50 स्टूडेंट का अगर लेक्चर लेना है तो दैट कॉस्ट विल बी, टोटल कॉस्ट भी फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज। अगर 50 का बैच होने के बाद एक स्टूडेंट आया और मुझे बोला कि सर मेरा भी एक लेक्चर ले दो 1 घंटे, तो दिस इज द एक्स्ट्रा। गेटिंग दिस? तो एक्स्ट्रा लेक्चर लेते समय मैं क्या करूंगा, अगेन माय वेरिएबल कॉस्ट विल बी हायर इन केस ऑफ सच काइंड ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट्स। मेरा फिक्स कॉस्ट सेव होगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में भी एक्स्ट्रा, वेरिएबल कॉस्ट में भी विल बी नॉट सिमिलर एज कंपेयर टू योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। पहले जैसा वेरिएबल कॉस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सम ऑफ द टाइम्स इट मे बी इन हायर देन योर प्रीवियस कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में है, हम लोगों को क्या करना है, जितना भी एक्स्ट्रा कॉस्ट हम लोगों को देनी पड़ेगी, उतनी ही हम लोग क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। Putting this. Now, the firm uses only those costs that are directly attributable to the output of specific product. जो कॉस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, उसी कॉस्ट का हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। Getting this? It may happen that you may get the extra production at extra raw material at same prices as well. अगर उतना ही prices में मुझे मिलता है तो at that time what will happen? Total cost, that is the marginal cost of my product, will be again towards lower side. अगर उसी रेट से मार्केट से मुझे सप्लायर मिलता है
उसी रेट से मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए मटेरियल मिलता है, उसी रेट से मुझे लेबर मिलता है, उतने ही एक्सपेंसेस में मैं खर्चा करूंगा, तो मेरा टोटल कॉस्ट पिछले वाले टोटल कॉस्ट से कम रहेगा, क्योंकि आई हैव नॉट एडेड हियर फिक्स कॉस्ट, only I am charging variable cost, that is the material cost, labor cost and direct expenses cost. I will be charging. That's why the extra units production cost may be less, and that you can charge over in the marginal cost and cost pricing. Unless the manufacturer's products are in direct competition with each other, the objective is achieved by considering each product in the isolation and fixing its price at the level which is calculated by maximize its total contribution. If again it depends upon your competition, what kind of competition is there into the market, so it decides me how much marginal cost you can charge. Getting this? So this is the marginal costing, and marginal cost pricing permits to the manufacturer to develop far more aggressive pricing policy than does full cost pricing. इसमें क्या है, एग्रेसिव प्राइसिंग, टोटल कॉस्ट या फुल कॉस्टिंग का जो मेथोडोलॉजी था, इससे भी एग्रेसिव प्राइसिंग डिसाइड करने का आपके लिए ऑप्शन मिलेगा, अपॉर्चुनिटी बन जाएगी इन केस ऑफ मार्जिनल प्राइसिंग, because the prices of raw material, prices of labor, that is the labor rates, and prices of direct expenses may vary as per the market condition. So as per that market condition, you will decide your marginal cost as the total cost of production, and accordingly we will decide the selling price. Marginal cost pricing is more useful for the pricing over the life cycle of the product. मेरा product कौन से life cycle से गुजर रहा है, whether I am in growth state, whether I am in innovative state, entry level, whether I am at growth or whether I am in decline state. Okay, तो उसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, we will add some of the short term cost, that is the marginal cost, and we will keep these marginal cost from the fixed cost, because fixed cost you have already recovered. फिक्स कॉस्ट हम लोगों का जब हमारा इनोवेटिव स्टेज था, एंट्री लेवल था, ग्रोथ लेवल था, तब हम लोगों ने क्या किया है, फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर किया. नाउ we are going towards the declining stage. At the declining stage, we will not charge once again fixed cost, we will charge only variable cost. So this is about marginal costing. Okay, the marginal costing marginal cost pricing is more effective than full costing pricing. Getting this? So why it is more effective? Because the prevalence of multi-product, multi-process and multi-market concerns make a absorption of fixed cost into product cost absorb. उसमें क्या है, if you are producing multi-product, means under one roof we are preparing various products, तो रेंट तो फिक्स कॉस्ट सेम ही है सबके लिए. अगर if in one factory I am producing product A, product B and product C, तो उसी फैक्ट्री का रेंट 5,000 अगर मुझे देना है, तो दिस 5,000 रेंट आई विल चार्ज ऑन प्रोडक्ट ए, some part I will charge on product A, some part I will charge on product B and some part I will charge on product C as well. तो फिक्स कॉस्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद दूसरा कौन सा कॉस्ट रहेगा, दैट विल बी वेरिएबल कॉस्ट. So you have to do the calculation of only variable cost while deciding the selling price of your product by marginal costing. Cost and price will vary among the different products with different वेरियस प्रोडक्ट के कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट अलग रहेंगे, इसलिए हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट अलग रहेगा एंड हर एक मार्केट का प्राइस अलग रहेगा. So marginal cost in Pune will be different, marginal cost in Nagpur will be different. Getting this? So we will decide this. Okay, the dominant force is in innovation. तो आप कितने इनोवेशन से मार्केट में how you are going to reduce the cost of production, cost of labor and cost, so direct expenses. So this will also affect on the marginal costing technique. Okay, student, this was something about marginal costing technique. Understood this marginal costing technique? क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में हम लोग टोटल कॉस्ट, सॉरी फिक्स कॉस्ट चार्ज नहीं करते हैं, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज ऑलरेडी रिकवर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी नंबर ऑफ यूनिट्स, इसके पहले नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन करके रिकवरी किया है.
अभी सिर्फ हमको क्या करना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है उसी फैक्ट्री में जिसका रेंट हम लोगों ने ऑलरेडी रिकवर किया। तो अगर नया प्रोडक्शन करोगे तो फिर एक बार फैक्ट्री का रेंट उसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट्री का रेंट ऑलरेडी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रीवियसली हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है उसमें हम लोगों ने रिकवर किया है। तो नया प्रोडक्ट में कौन सा चार्ज लगेगा, ओनली रॉ मटेरियल का, लेबर का और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का चार्ज। दैट वाज समथिंग अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। क्लियर एवरीबॉडी? जस्ट टेल मी फास्ट। Yes, just give me reply whether you understood marginal costing or not. Yes, sir. Okay. Now let us go for cyclical pricing. Cyclical means what? My price is not fixed. My price is going to change as per boom, as per recession, as per depression, and as per growth or as per prosperity. Getting this? So this is called as a cyclical pricing. Means what? Pricing strategies are not fixed as per the changes in economic environment, macroeconomic environment. I can make ups and downs in my prices. That is the simple meaning of cyclical pricing. So see, it refers to the pricing by the firm depending upon the assessment of general economic environment. So by studying the economic environment, external economic environment, as a manufacturer, as a seller, I will make the ups and downs in my prices. So whether my economy is boom economy, whether it is in boom condition or whether it is in depression condition, accordingly, I will decide my prices. If I'm doing this strategy, that time it comes under cyclical pricing. Now, it is appropriate pricing strategy at different stage of business cycle. अपना business cycle कौन से stage से जा रहा है, accordingly we will take this. Let us take an example. जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए, तब से मोबाइल के प्राइसेस बढ़ गए, तब से इंटरनेट के चार्जेस बढ़ गए, तब से अपने मोबाइल के जो चार्जेस है ना, सबके रेट्स बढ़ गए। क्यों? एज पर दिस इज द काइंड ऑफ साइक्लिकल प्राइसिंग। इन साइक्लिकल प्राइसिंग में क्या करते हैं, एज अ सेलर वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ some of the time with respect to boom, with respect to recession, with respect to market demand, I have chance to increase and decrease the prices. Means what? I have not made any kind of contract with my, हम लोगों ने कॉस्ट बेस में और मार्केट बेस मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, वी कैन मेक द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल बी बाउंड टू मी एज वेल एज टू माय कस्टमर। लेकिन साइक्लिकल प्राइसिंग में क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो जाएंगे, अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे, अकॉर्डिंगली माय प्राइसेस विल बी चेंज। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। So every business cycle consists of four phases, that is the recession, depression, recovery and prosperity. So these are the various four business cycles. Okay. Contraction comprises of in the first two stages. तो रिसेशन और डिप्रेशन आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कम करते हैं। वी कंट्रोल आवर रिसोर्सेज, वी कंट्रोल आवर कॉस्ट। ओके। एंड लास्ट टू फेजेस दैट इज द रिकवरी एंड प्रॉस्पेरिटी में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपांशन करते हैं बिजनेस। गेटिंग दिस? सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेरियस स्टेजेस इन द इकोनॉमी, आई विल एडजस्ट माय प्राइस। द रिसेशन फेज इज बेसिकली डाउनटर्न फेज ऑफ द इकोनॉमी, नीचे आने का स्टेज चालू होगा, which is characterized by the decline in aggregate demand and wages. तो रिसेशन फेज में क्या होता है, मेरा मार्केट डिमांड नीचे आएगा, at that time we can contract our demand, my demand will be contracted, so that accordingly I have to adjust the prices. So within the contracted demand, within this lowering the your demand, you have to adjust your price. During the recovery, some macroeconomic demand which changes following the GDP. जीडीपी के हिसाब से रिकवरी में क्या हो जाएगा, मार्केट का डिमांड भी बढ़ेगा, तो मार्केट का डिमांड बढ़ने से वेज रेट भी बढ़ेंगे, अकॉर्डिंगली आई विल सेट माय प्राइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। Inputs and outputs will also vary as per the level of economy. So
With this change, I will make the fluctuations into my pricing strategy. Business cycle cost decline. Business cycle cost decline in aggregate economic activity, which results in the fall in the purchasing power of consumer. तो जब business cycle decline stage में जाती है तो क्या होता है, automatically it shows the decline in the purchasing power. तो उतना मेरा purchasing power भी, तो as per economic activity, जैसे भी कुछ प्रॉब्लम इकोनॉमी में आ जाएगा, अकॉर्डिंगली आई विल स्टॉप माय परचेसिंग पावर, आई विल रिड्यूस माय परचेसिंग पावर. तो पिछले महीने में फॉर एग्जांपल आई हैव स्पेंट 4,000 रुपीज फॉर परचेसिंग वेरियस ऑफ माय कमोडिटी. तो इसी महीने में मैं क्या करूंगा, अगर इकोनॉमी डाउनटर्न है रहेगा तो आई विल कंट्रोल दिस माय परचेसिंग पावर अप टू 2,000. So we are going to understand, due to ups and downs in the economy, purchasing power of consumer can also change. So with respect to this purchasing power, I need to set my price. As a result of this, it is argued that strategies are to be revised and appropriate pricing policies needs to be adopted depending on the phase of the business cycle and economy passes through. तो जिस फेज से मेरा इकोनॉमी जा रहा है, जिस फेज से मेरा बिजनेस साइकिल जा रहा है, अकॉर्डिंगली आई नीड टू एडजस्ट माय प्राइसेस इफ आई वांट टू सर्वाइव इन दिस कंपटीशन. ओके, so if I am, my pricing policies are rigid, at that time I will suffer the loss. Getting this? At that time you should have to adapt the cyclical pricing policy. During the period of depression, prices of manufactured articles and manufactured goods, shares and stock may fall more. Prices depression में नीचे आएंगे. And during boom period क्या होते थे, prices of commodities will rise very wide. तो इसके हिसाब से मुझे क्या करना है, डिसीजन लेना. This was the third pricing strategy. पहले देखा हम लोगों ने cost plus, दूसरा देखा marginal costing, तीसरा देखा cyclical pricing. The next one is your penetration pricing. I think in the last lecture also we had discussed some time about penetration pricing. Just look towards this slide, read this slide, and then we will discuss. Okay, done. Gone through this slide. Yes, sir. Yes, sir. Now try Yes, to sir. understand. Do you know Kia Motors? Kia Motors का गाड़ी आपने देखा है क्या, फोर व्हीलर सेक्टर में? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज नॉट इंडियन कंपनी. ठीक है, तो पेनिट्रेशन क्या होता है, दिस इज एप्लीकेबल टू किया मोटर्स. तो पिछले 2-3 साल में उन्होंने क्या किया और अभी वो कहाँ पे है. So they have captured entire or more major proportion of Indian car market areas. Q, with the help of penetration pricing. Kia Motor is not Indian company. It was not brand earlier into Indian market. To make its entry into the Indian market, they have adapted the strategy of penetrating
pricing. So what they have done at the time of entry to attract the customers, to attract newly into the market, they have set their prices at lower cost. तो मार्केट का सर्वे करके सबसे कॉस्ट उतने उनके कम. So at lower cost they were offering the product at the initial level. Getting this? And it was the opportunity to them to attract the customers from the competitors. Competitors से मेरा competitors से अटैच हुआ कनेक्ट रहेगा. जो कस्टमर है वो कस्टमर इतने आसानी से ब्रांड नहीं बदले. उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? I should have show the price competition. I have to give the commitment related to the price. My price should be that there should be the so much differences between my price and competitors price. मान लो टाटा मारुति सुजुकी का गाड़ी अगर फॉर एग्जांपल सेलेरियो की कीमत है 6 लाख रुपए, अगर उसी लेवल का उसी कैटेगरी की किया मोटर्स की गाड़ी अगर मुझे 5 लाख को मिलती है, मीन्स व्हाट आई विल से एज अ कस्टमर I will save 1 lakh rupees in one product. Getting this? And features are the same, qualities are also same. At that time, to save this 1 lakh rupees cost, I will move from this Maruti Suzuki to Kia Motors. When it is possible, there is the large difference between my prices and my competitors' prices. At that time, it is possible. And to attract my competitors, to break my competitors customer and to attract the customers of my competitors towards me, I need to use the strategy of penetration pricing, where at initially, try to understand, at initially I will keep price at very lower cost. Let us take another example of Jio. जब जियो मार्केट में टेलीकॉम सेक्टर में आ गया तब उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट दे दिया. आर यू एग्री और नॉट? दिया था कुछ साल पहले फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट. सिर्फ आप कार्ड परचेस करो, 1 महीने के लिए फ्री रहेगा. अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग एंड अनलिमिटेड मैसेजेस. Was it situation before some days ago with respect to Jio? Yes or no? Yes, sir. अभी देखो जियो के प्राइसेस फ्री. जियो अभी फ्री कुछ देता है क्या? नहीं देता है. जियो ने प्राइसेस बढ़ गए, जियो के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं. अभी अगर मुझे 3 महीने का प्लान लेना है तो आई हैव टू पे 700 रुपीज फॉर अनलिमिटेड प्राइसेस. तो उन्होंने क्या किया? टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स दे हैव प्रोवाइडेड द सर्विसेज एंड कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियली. Once they have generated that much market area, once they have captured the market, then they have raised the prices. अभी कस्टमर मेरे सिवा किसी और के पास नहीं है. तो penetrating prices में हम लोग क्या करते हैं? Initially to make the entry into the market, we will keep our prices at very low, and due to low prices, my customer will attract towards me from my competitors. It is the strategy of breaking customers from your competitors. That is penetrating pricing. The market penetration pricing relies on the strategy of using low prices initially to make wider number of customers aware of the new product. नया प्रोडक्ट का लॉन्च करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? कस्टमर अवेयरनेस, जब तक गाड़ी मार्केट में नहीं जाएगी, जब तक गाड़ी रास्ते पे नहीं जाएगी, तब तक लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. Getting this? That's why with minimum price, with lowest price, we will deliver the product. We will deliver some lots into the market, and after that, once the product, because product it will itself will generate the advertisement. तो आपको फिर एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है. खुद प्रोडक्ट खुद का एडवर्टीजमेंट करेगा एंड दे विल इनवाइट कस्टमर, दे विल अट्रैक्ट कस्टमर टुवर्ड्स द product, and in this way we will build the market share. Okay, penetration pricing comes with the risk that new customer may choose brand initially but prices increases, they will switch towards the competitor. ऐसा भी कर सकते हैं, जो कि जियो के बारे में नहीं हुआ. अभी भी we are using the internet network of जियो, क्योंकि एक बार उन्होंने क्या किया? प्राइसेस कम कर देते. पहले दिस वाज द इंडियन ब्रांड रिलायंस जियो. रिलायंस ने लॉन्च किया, प्राइसेस बहुत कम रखे. उन्होंने जियो ने प्राइसेस कम करने
करने से क्या हुआ, बाकी कंपनी ने भी उनके प्राइसेस कम कर दिए। जब जियो को कॉन्फिडेंस आया कि नाउ वी आर लीडर इनटू द मार्केट, देन दे हैव रेज्ड द मार्केट, दे हैव इंक्रीज्ड द रेट्स ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर। तो उन्होंने, अभी क्या हो रहा है, नाउ जियो इज बिकेम लीडर ऑफ द मार्केट। तो उनके मार्केट के प्राइसेस देख के अभी टाटा उसके उनके प्राइसेस देख के अभी वोडाफोन, आइडिया उनके प्राइसेस सेट कर रहा है। उल्टा हो गया, getting this? So this is happens when you become the leader of the market. Until and unless you don't become the leader of market, till that time you will keep your prices towards lower side. Once you have captured your target market, then you can make increase and decrease in your pricing. तो इसी strategy को बोलते हैं penetration strategy. Basically this is the part of marketing, but it is in economics. So we have to look toward this by the uh, approach of economics. तो क्या है, the goal of price penetration strategy is to invite customers to try new product and build market share with the hope of keeping the new customers once prices rise back to normal level. Okay. यानी पहले इनिशियली कम करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा प्राइसेस बढ़ाएंगे, बट वी हैव टू टेक केयर दैट our customer is not moving once again towards my competitors. ये रिस्क हो सकती है अगर हम लोगों ने प्राइसेस बढ़ाया तो जो से कस्टमर फिर एक बार वोडाफोन के पास जाए, बिकॉज देयर इज नो दैट मच डिफरेंशिएशन बिटवीन जियो एंड वोडाफोन, तो कस्टमर मेरा लूज हो सकता है। दिस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज जनरली बाय द न्यू एंट्री टू द मार्केट। न्यू एंट्री करते समय मुझे ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी खेलनी पड़ेगी। ओके, अभी इसका रैशनल क्या है देखिए। इट इज कॉमन फॉर न्यू एंट्रेंट। न्यू एंट्रेंट कभी भी अगर लॉन्च करना है तो क्विक मार्केट एंट्री करना है, मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो मुझे यही पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। The price is one of the easiest way to differentiate new entrant from the existing market, क्योंकि कस्टमर जब कभी डाइवर्ट हो जाएगा, that time he will first look toward the price. What is the price between these two products? Getting this? If there is a huge difference, that time customer will move towards the new entry or new entrant. Otherwise, he will stick with the same product. The goal of pricing strategy is to capture the market share, to create the brand loyalty, to switch customers from competitors, and to generate significant demand looking to utilize economy of scale. तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कम पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कब यूज करते हैं? मार्केट कैप्चर करने के लिए, ब्रांड तैयार करने के लिए, कस्टमर मूव करने के लिए कॉम्पिटिटर से, और लुकिंग टू यूटिलाइज इकोनॉमी ऑफ स्केल। यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का तो इतना कम से कम खर्चा निकलना चाहिए मेरा, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट तो निकलना चाहिए। एट दैट टाइम यू विल डिक्रीज योर कॉस्ट। ओके, एंड टू ड्राइव कंपटीशन आउट ऑफ द मार्केट। मार्केट से हमारा कंपटीशन लाने के लिए, कंपटीशन कम करने के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं। दिस इज समथिंग अबाउट पेनिट्रेशन मार्केट। The next one is the price leadership. Just go through this slide one, then we will discuss price leadership क्या होता है। जैसे कि अभी जियो ने किया है प्राइस लीडर। यस,
प्राइस लीडरशिप क्या होती है? पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में एंट्री करेंगे, we will penetrate the price, we will penetrate the customers, and once we become the leader of the market, at that time whatever price I will charge, the same price would be charged by my competitors. यानी मेरा competitor मेरा strategy देख के उसके prices decide करेगा. Means what? I am a leader of the market. अभी जियो जितने prices में लीड कर रहा है, वही प्राइसेस अभी वोडाफोन एंड आइडिया दे आर कीपिंग, एयरटेल दे आर कीपिंग, बिकॉज Vodafone and Idea or Airtel has to rethink about its pricing strategy looking towards the Jio pricing strategy. तो Jio को देख के, Jio is the leader in the market into the telecom sector, तो उसको देख के Vodafone को, Idea कंपनी को and Airtel कंपनी को उनके prices decide करने पड़ रहे हैं. So if you are taking the means, once the decision is taken by the leader company, the same decision we have to follow. That is something about price leadership. So it happens into the oligopolistic market. Oligopolistic market यानी there are very less competition into the market and very less people are there who are manufacturing similar products. For example, telecom industry, कितना competition है? We have Jio, Airtel, Vodafone, Idea. इतने ही. Getting this? So this is called as a oligopolistic market where competition is very. One of the advantage of the price leadership is that it forces the competition to rethink strategies to compete with the price set by the dominant organization. Dominant organization जो रहेगा, जो प्राइस का लीडर रहेगा, जो डिसाइड करेगा, हमारे कॉम्पिटिटर, हमारे मार्केट की प्राइस वो डिसाइड करेगा, वो प्रोडक्ट मार्केट में कितने को बेचना है वो डिसाइड करेगा, एंड वी हैव टू फॉलो दिस प्राइस एज अ कॉम्पिटिटर. दैट इज प्राइस लीडरशिप. Price leader is usually large organization that operates with low production cost. उसको possible है production cost because they have captured the entire market or more than 50%, more than 60% market they have already captured. So now they are a leader in case of price deciding. Now this puts them in control of undercutting prices charged on the by the competitor. प्राइस लीडर क्या करेगा, कॉम्पिटिटर जो आपसे प्राइसेस ले रहा है उससे भी अगर मैंने कम दाम में दिया तो कॉम्पिटिटर क्या करेगा, उसको भी उनके भी प्राइसेस कम करेगा. इट फोर्स टू द कॉम्पिटिटर, प्राइस लीडरशिप फोर्सेस टू द कॉम्पिटिटर टू रिड्यूस द प्राइसेस, बिकॉज एक बार मैंने कम कर दी तो क्या हो जाएगा, कस्टमर विल मूव टुवर्ड्स माय प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाएगा. इसलिए अगर मैंने प्राइस कम कर दिया तो कॉम्पिटिटर भी मेरा क्या करेगा, प्राइसेस कम करेगा. As there are lesser organization operating in elastic demand, the price leader often adopts such strategy to restrict new emerging competition. New emerging competition को restrict करने के लिए price leadership ये काम करता है. Now the organization that are accurately identify industry trends, जो organization industry का trend जानते हैं, are make profit despite the competition. तो competition ignore करके they can generate the profit. They can implement the price leadership model to deal with the expected market change. जितना भी market में change हो जाएगा, accordingly they will decide the price. They will be the leader into this price deciding. This compels competitors to either match prices or invest in the resources that can modify such trends. आपको क्या करना है, आपकी प्राइस एडजस्ट करनी है या आपको मार्केट का लीडर बनना पड़ेगा. I have to adjust my price with the market leader, otherwise I have to reduce the price to become the market leader. मैं खुद बनूंगा मार्केट लीडर एंड देन आई विल डिसाइड द प्राइस, या अगर वो मुझे पॉसिबल नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कुछ प्राइस लीडर मार्केट का रहेगा, जो कुछ प्राइस वो सेट करेगा वही मुझे फॉलो करनी पड़ेगा. As the organizations with very large capacity have the ability to operate in multiple locations and cater the substantial customer base, to generate the substantial customer base, they can get the liberty to undercut the prices. उनको chance मिलेगा because the price of Kia Motors in other country, this will be not similar to Indian cost. Indian में क्या है, लेबर कॉस्ट कम है, उसके बाद
रॉ मटेरियल अगर सस्ते में मिलता है तो यहाँ पे डिलीवरी करना 5 लाख को ही पॉसिबल है, लेकिन वही कार चाइना में, वही कार जर्मनी में उतने कॉस्ट को नहीं मिले। गेटिंग दिस? बिकॉज कॉस्ट आर डिफरेंट एज पर द रीजन। Smaller organizations that don't match these prices lose their market share. Smaller organization को ये possible नहीं होता है प्राइस लीडिंग करना, तो वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली दे विल लूज देयर मार्केट शेयर। Okay, since customer prefer both quality and productivity, they are more likely to select the organization with superior execution। तो अच्छे तरीके से माल देता है, अच्छी तरीके से प्रोडक्ट का डिलीवरी करता है, वही कस्टमर क्या करेगा, ले लेगा। नाउ रिलायंस जियो इज द लीडर ऑफ मार्केट। जस्ट गो थ्रू दिस स्मॉल केस स्टडी ऑफ द रिलायंस जियो। Yes, understood this case study of Reliance? Yes, sir. Okay, I think we have finished our time, so we have to stop here. So to the next lecture, क्योंकि अभी 5 मिनट में प्राइस स्कीमिंग जो नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होने वाला नहीं है, बड़ा है, और उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग और एक ये है। अभी देखिए टू दिस लेक्चर, what we have seen, we have studied the methods of pricing, in which we have studied cost plus approach or full cost pricing method. Then we have studied about next method, marginal cost pricing. Third method, we have studied about the cyclical pricing, and next method we have studied about the penetration pricing, and last one was the price leadership. So these are the various pricing strategies we are studying under this fourth unit. So approximate 50% of fourth unit we have finished. Okay, so let's stop here. We will have session in the next week. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Good day. Thank you, sir. Yes, bye.